The Lake Isle of Innisfree. So this poem is written by William Butler Yeats. He was an Irish man, and this poem is been written from the place where he's recently, that is London, and he wants to go to a place Innisfree, which was his native place, and he has been there as a kid. In that place, he finds peace and all the natural elements. He feels very nice over there, and he feels that he could get peace only at that place. So he wants to go back to the Innisfree from London, and he talks about the natural elements, and he wants to escape from London. Uh, there are three stanzas in the poem. In the second stanza, in the very first stanza, the poet has explained what he wants, and in the second stanza, the poet tells that the few elements from where he could get peace. So let's start with the poem. The Lake Isle of Innisfree. Innisfree, a place where he spent a lot of his lifespan, and the place which is very close to him. And this poem is about all nature and natural theme. So the first stanza is, I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there, a clay of wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. So the poet from in the very first line means to say that I will arise and go now and go to Innisfree, as he is in London, but he wants to go to Innisfree. So he says कि I will arise. Arise means I will get up and go. Go मतलब कहाँ पे जाना चाहता है वो? Innisfree में. मैं अभी उठूंगा और मैं Innisfree में जाऊंगा. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड. और मैं वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, एक छोटी सी हट, एक घर सा बनाऊंगा. बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड, विच वुड बी ऑफ क्ले. क्ले मतलब वो जो मिट्टी का बना होगा, एंड वैटल्स. वैटल्स इज बेसिकली जो स्टिक्स हम यूज़ करते हैं घर के आसपास फेंस लगाने के लिए. तो वो कह रहा है कि मैं एक छोटी सी हट बनाऊंगा, एक घर बनाऊंगा, जिसके आसपास किससे बनाऊंगा? क्ले एंड वैटल्स से. सो वैटल्स इज द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर फेंसिंग. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. Will I have there मतलब वहां पे मैं खाऊंगा. क्या खाऊंगा? 9 bean rows. Bean क्या होता है? Bean is a type of vegetable. So the poet says that I will grow that bean vegetable in 9 rows. So 9 bean rows will I have there, अ हाइव फॉर द हनी बी. जैसे बी हाइव होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसे बी हाइव कहते हैं. तो वो कह रहा है कि मैं उसमें से हनी खाऊंगा. तो वो खाने की जो चीज़ें हैं वो भी सारी नेचुरल हैं. तो वो बोल रहा है कि कैसे वहाँ पे उसने नेचर को डिपिक्ट करा है उस पोएट ने. पोएट वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी नेचुरल, एंड ही वॉन्ट्स इवन थिंग्स विच ही ईट टू बी नेचुरल. And live alone in the bee loud glade. Glade is basically an open space, a space which is totally clear. So he says कि I will live there alone. He wants to live there alone in a bee loud glade. Bee loud मतलब जो bees हैं, they make a buzzing sound which is very loud. So वो कह रहा है कि मैं उस खुली सी जगह में, उस खुले से मैदान में रहूँगा जहाँ पे bee की जो है sound हो. Now let's move to the second stanza. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer, a noon a purple glow, and evening full of the linnet's wing. So in this stanza, the poet says that जो peace है, the mental peace, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. वो कह रहा है कि मेरे को उस जगह पे पीस मिलेगा. पीस का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाते हुए उसको पीस मिल जाएगा. दिस मीन्स कि पीस कम्स वेरी स्लो, ड्रॉपिंग स्लो. जैसे बूंद बूंद करके बाल्टी भर जाती है, तो उसी तरह से ही बूंद बूंद करके उसका जो पीस है वो पूरा फुल हो जाएगा, उसका माइंड प्रॉपरली पीसफुल हो जाएगा. Dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. So now the poet has started to tell that which elements could provide him peace. So the very first element is the vales of the morning. Vales of the morning means basically जैसे कि एक लेडी घूंघट ओढ़ लेती है,
उसी तरह से जो क्लाउड, जो आसमान है, वो क्लाउड्स के अंदर छुप जाता है, क्लाउड्स उसको पूरा कवर कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम पे जो क्लाउड्स हैं वो आसमान को छुपा देते हैं। To where the cricket sings. Now, the second element is a cricket. Cricket is an insect which appears to be like a grasshopper but has small legs as compared to grasshopper, and it's of green in color. So वो कह रहे हैं कि where the cricket sings, जहाँ पे उसको क्रिकेट की साउंड सुनाई देगी, जहाँ पे वो जो क्रिकेट है वो गाना गा रहा है। Their midnights all a glimmer and noon a purple glow. जैसे रात के टाइम पे तारे जो हैं वो चमक रहे हैं। दिस इज द थर्ड एलिमेंट विच इज टॉकिंग अबाउट। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, तारे जो हैं सारी रात जो है शाइन करते हैं, ग्लिमर करते हैं, चमकते हैं। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के टाइम पे आसमान के ऊपर एक पर्पलिश सा ग्लो होता है, मतलब पूरा एक पर्पल लाइनिंग जो है आसमान में आती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग। लिनेट, लिनेट इज बेसिकली अ बर्ड जो ब्राउन और ग्रे कलर की होती है, और उसका रेड कलर की ब्रेस्ट और फोरहेड होती है विद अ वेरी शॉर्ट बीक। सो वो कह रहा है कि एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और शाम के टाइम पे वहाँ पे सिर्फ आपको लिनेट बर्ड जो है उड़ती हुई नजर आएगी। सो इन दिस पैराग्राफ वी हैव टॉक्ड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स विच पोएट थिंक्स दैट ही विल गेट पीस फ्रॉम। द फर्स्ट वन इज द वेल ऑफ द मॉर्निंग, सेकेंड इज द क्रिकेट सिंग्स, third is the midnight all a glimmer. Glimmer matlab when they're talking about the stars. Fourth is the noon a purple, and noon a purple glow. Noon matlab दोपहर के टाइम पे एक पर्पल ग्लो होता है. And last one is when the sky is full of linnets wing. Now we'll come to the last stanza. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadways or on the pavement grey. I hear it in the deep heart's core. So, in this stanza, the poet says that I will arise and go now. So, this sentence is a repetition of the very first sentence of the poem. So, he says that he wants to get up right now and go to the place for always night and day, मतलब जहाँ पे उसको सारा टाइम जो है क्या सुनता रहता है कि जैसे जो लेक है, आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। उसको सुबह शाम बस यही सुनता रहता है कि जैसे जो लेक का पानी है, जो इनिसफ्री एक लेक है, उसका जो पानी है वो क्या करता रहता है, लैप ओवरलैप करता रहता है एक दूसरे से, और उसकी जो साउंड्स है उसके कानों में उसके दिल में वो साउंड्स जो है वो बसी पड़ी है, और उसको सुबह शाम वो ही सुनती रहती हैं। While I stand on the roadways or on the pavement grey, जब मैं उस पे रोडवेज में, अभी वो लंदन में है तो वो पूरी इस्टेब्लिश्ड है जगह, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि जैसे वो जो रोडवेज हैं, जो पेवमेंट्स हैं, पेवमेंट्स होते हैं जो साइड पे पटरी होती है चलने के लिए, तो वो जो ग्रे कलर की है, मैं कहीं पे भी खड़ा हूँ पर मुझे ये जो साउंड है पानी के लैप करने की, जो वाटर है उस लेक का वो जब लैप करता है एक दूसरे से, वो साउंड मुझे नहीं भूलता चाहे मैं कहीं पे भी खड़ा हूँ। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट कोर, वो कहते हैं ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो उसी तरह से पोएट कह रहा है कि मुझे वो जो साउंड्स हैं मेरे दिल में बहुत अंदर तक जो है वो सुनाई दे रही हैं। तो बेसिकली द पोएम is about all the natural elements which poet is missing. He is basically homesick and he wants to go back to his place, that is Innisfree, and he wants to escape from London. So in this poem the poet has just expressed his feelings about how he is indulged in the natural elements which we have God gifted, which we have been gifted by the God. And this poet, William Butler Yeats, was an Irish poet. He was a dramatist as well as a prose writer, and he was one of the most famous 20th century literature writers. So, this piece of writing is by William Butler Yeats, and it's a very interesting poem which has been expressed by William Butler Yeats about his all the memories which he has spent at the Innisfree.